मैडम इन्ना अंदर साइड तक करो। मैडम इधर साइड मैडम दूसरे नंबर पे आज नंग जो अगे आज साइड मैं वो नैना जी करते करना बड़े बड़े
1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਟਾਲ ਸਾਡਾ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣਾ ਟੀਵੀ, ਕੈਰਮ ਬੋਰਡਸ, ਬੱਚੇ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡਸ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੂਡੋ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਰ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਸਟਾਲ has been put up by our teacher Mr. Paramjit Singh. So over to him. Just come and explain something. Okay, sorry. This stall was put up by Mr. Pankaj and Mr. Harvinder Singh too. Very good. साਡਾ फोटो सॉल्व हो गया है। थैंक यू जी। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ। आजकल करते हो ना जो कोई भी काम। हाँ जी, आजकल कोई नहीं कर रही तो मशीन बन रही ਉਹ ਖੰਭੇ ਦਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਖੰਭੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿਣਗੇ। आज ना सारा दौर में चीज हो गया। ਬਸ ਆ 15 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਲਿਆਉਗੀ ਤੇ कोशिश कर रही थी दोबारा लेके आने दो जी। थैंक यू, प्लीज एंजॉय। थैंक यू, थैंक यू, प्लीज एंजॉय, प्लीज, थैंक यू। Now we have our English teacher, Mr. Arun, presenting today's time, wherein we have all the technology available, laptops, phones, robots, to our stuff. Over to Mr. Arun. Yeah, just we want to represent the year from 2000 to 2018, where all the modern technological advancements have taken place, from robots to iPhones to even modern e-cars we have. So this is what we want to depict. Besides that, we have laptops. Of course, we couldn't get a MacBook because somebody had it, but they were not willing to offer it. Thank you. Sir, would you like to share something that takes back to the 19th time, right? Not the 2000 time, 19th century. Yeah, even in the 90s, I mean, the famous gadget that they had was TV, which is placed there. And the radios, the radio I find is a little older, maybe it belongs to 70s, but then we had much more advanced, radios in the 90s. And apart from that, what else was like, the bikes were coming in, the cars were coming in, more modernized kind of Maruti cars. That was the time when we moved from Ambassador and Fiat business to what we call it, Maruti business. So that was the time when it grew as a business. So that was of the 90s. Anything else? Thank you so much, sir. Live on YouTube now. And
ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਯਾਦ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਪਲੇਸ ਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲੇਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ इंस्पायरिंग स्टोरीज बच्चे ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹ 1 2 ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ तो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਚ ਪੜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 1 2 3 run to the tree 4 5 6 green to the stick 7 8 9 tell me the time 10 11 12 go and ring the bell ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ And now we have our event coordinator, Ms. Vanita Saeed. Ma'am, what would you comment about this year's celebration? This Grandparents' Day celebration is always very special event for us, a mega event for Harvest International School. And this has become a kind of USP for us. I think all over India, this is the first school that celebrates Grandparents' Day at this magnitude and level. And we always look forward to more and more grandparents joining us. And it is because Harvest believes in their contribution and their role in shaping up the children. It's not just parents who shape up, but grandparents who play a very important role. And recognizing the same, we invite grandparents, and it is a pleasure that I come to know that parents from so many different places, even far off places, they have come here. Yeah, from Noida. Yeah, I came to know that is our pleasure. That's a blessing for us and for our children, our school, that grandparents from different places, far off places come here and witness this. I think this is really a very special day and looking forward to many more such days in their presence here. Thank you. Hello, sir. What is your DC Gupta. Sia Gupta, Pastor, and Saira. We are very proud of getting this function, and we have come all the way from Noida. And only one point, Thanks a lot. Our pleasure. How do you feel? Very wonderful. You could never imagine such a grand thing besides so many nice people. It's a big change and a big surprise. I think for the first time we are seeing such a big institution right in the center of the village. That's really good. The second side and the way we have heard about kids going around and the kind of education being imparted to them is fantastic. Just fantastic. I think we are going to have a very big good time. My name is Jinnat Chaudhary. I have come from Noida. I am Ryan's grandfather, and I am very pleased to find this school so good. The environment is really fantastic, and enjoying all aspects of this. And we wish all the best for this school. Yes, marvelous, marvelous. It's reminds of the olden days, you know. There are not many more things in here for That you is inside it. There is also that is going to see. Yes, please enjoy. Thank you, thank you. God bless you. Yeah, really, God bless you. I'm Ryan's grandma. So really, हाँ मैम, मैं ट्रांसफर यार आज अगर प्रोग्राम में बहुत पसंद आया पंजाबी से पंजाबी कल्चर
ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਤ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਰਖਾ ਕੀ ਆ, ਚੱਕੀ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਮ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਸੁਣਾਓ ਮੈਮ ਆਪਣੀ। ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣਾਵਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਾਗਰ ਤੇ ਸਰਦੋਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇਹ ਪਿਕਚਰਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਵਾਲੇ ਭਾਏ ਇੱਕੋ ਤਵੀਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਲੜਦਾ ਤੇ ਨਾਦੇ ਨਾਦੇ ਕਰਦਾ। Thank you so much. Now we step on to the future. 2050 will have all these requirements with pure water and we'll have oxygen cylinders being sold. What do you say, Charlotte? Yes, that's right. In 2050, oxygen cylinder would be available in the market to buy. And now we are carrying that. We couldn't live without the oxygen cylinders. And we wouldn't get pure water. You can see over here that the oxygen cylinder would be of 15,000 rupees and the water bottle of 1 liter would be of 3,000 rupees. ਸਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਸਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਭਾਜੀ। I say that we should conserve it now so that our future generations don't have to wear oxygen masks. Thank you so much, team. And I think the students are right in the sense that 10 years ago we haven't even heard of air purifiers, but today air purifiers are in demand. And I believe It's a very common. I think every household has one air purifier for kids and for and water purifier is now a mandatory thing, and air purifiers are
कितनी प्राइस है आपकी? सारे कर लिए? बचपन याद आया Over to the next stall. This stall is by Miss G. So we are just wrapping up the stall almost. So this is our line. So please now let us wait for yes, all to the line. So how do you feel coming over here? This is my first coming like this. I'm very excited. God bless you. Thank you. बस तू कर देना नहीं लगा नंबर लगेगा तो नंबर दे दो सेंड कर देंगे गाड़ी का नंबर सेंड कर देंगे ठीक है मैं सिया को बोल रहा हूँ मजा आएगा ना तुम्हारा रोग ना सागर करी मारा कर दे मेरा भरा फड़ी हाँ जी ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਜੀ Sir, can you please update music on the spot for Kamal Khanna? Something show us 675. Let's go to the Christmas stall.
मैडम परली साइड आ जाओ। नंबर बच्चों ने दोस्तों की तरक्की से काम की तरक्की नाल की बात है। थैंक यू सो मच। अरे सामने रखिए। अरे ग्रैंड में कमी आ गई। पोस्टर्स कवर कर लो। Sir, explain. Any comments about the show? जिम्मे से सारे ग्रैंड पेरेंट्स की जान की पुराना गवर्नेंस करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ भी है जो कि कहने के आज जो है तो शायद बचपन की हुई बेसर तो नहीं बोलना चाहिए किसी ने अपनी जड़ा नहीं बोलना चाहिए तो किसी किसी भी पहुँच जाती है। मेरा क्वेश्चन थी कि जिसका कि मोबाइल फोन हर तरह की सहूलत है क्योंकि ऐसी चीज़ ऐसे बच्चे को है पर थोड़े बचपन में थोड़े को ऐसी मिस करते हैं हुण है उदों भी मिलती Thank you so much, ma'am. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਸਟਰਸ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ। अगले पोस्टर में साढ़े फ्रीडम फाइटर साढ़े पुराने आइडल इन्होंने सब्जियां पिक्चर चिपकाई गई हैं। बहुत वधिया एफर्ट है टीचर्स वालों ते स्टूडेंट्स वालों भी। उस तो अगे फिर स्पोर्ट्स पर्सन भी क्रिकेटर ने कपिल देव दारा सिंह सारे स्पोर्ट्स पर्सन इस दिखाए हुए हैं। उस तो अगे ये पुराना मिल सकते जिन्हें साढ़े जिन्हों को सानू इंस्पिरेशन लैनी चाहिए स्पोर्ट्स पर्सन उन्होंने सब्जियां पिक्चर चिपकाई हुई ने। एक होरले पोस्टर में साडा पंजाबी विरसा दिखाया गया है पंजाबी गुड़ियारा पुराना पंजाबी कल्चर जो कि अज भी असं मिस करते हैं। अज नहीं है पर पुराने टाइम थी पर हले भी सानू वो चीज़ इंप्रैस करती है। सानू हले भी एक चीज़ की जरूरत महसूस होती है। इस पोस्टर के बच्चे ने क्लासेस करी हुई है जिसके यातायात आवाजाही के साधन दिखाए गए इंडियन ओल्ड व्हीकल शायद यूट्यूब से ही लैके बच्चे ने पिक्चर्स इकट्ठी करी हैं पर एक दौर याद आता जो
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਖਾ ਸੀ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ, ਬਟ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੂ ਵੀਲਰ ਨੇ। ਕਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਮ ਅਦਰ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ great efforts made by the kids and the teachers. Great. And this side we have one full poster which the children have dedicated to only Bhagat Singh. I guess when it comes to freedom fight of India against for independence, Bhagat Singh's sacrifice of life and his name has always been prominent in the history, and they have put up the newspaper articles, pictures and paintings, and as well as quotations also portraying Bhagat Singh. Sir, next we poster, please, over to Harpinder sir. The next poster shows the old Bollywood songs, Pyar Kiya To Darna Kya, and all, which I remember this movie. जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। This is all reflected in the बहुत वधिया ही ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। सर थोड़े हाथ देख के लग रहा है बड़े प्राइज जीत के आए हैं सर, गेम्स खेल के आए हो जी? हाँ जी, मैंने 3 कूपन जीते थे, 3 ही बच्चे हैं जी उतने। Very good sir, very good, well done please. In this poster, you can say all Indian military officers are shown. They put up a great effort for us. They are the one. Because of them, we can sleep. We can have sound sleep because of them only. Hats off to them. In every occasion, whether it is cultural program, whether it is school program, anywhere, we have to be thankful to them because our nation survived because of them. This is a great effort by students and the teachers. Next we have old Indian currency. You can see that it is 15 paise and Anna Tikki, what was it called, Tikki, and we have all 10 coins. As a grandparents can we have 10 paise was sufficient for them to get a refreshment at that time, but today even 10 rupees can't get it. Moving next, we have popular TV serials of our childhood. कितने एक मिनट आ दिखा दियो आगे बस उधर ही आने लगे सारे स्टॉल होगा चल मैं इधर ले जाना यार मुझे नहीं आया ब्याह करवा के फंस गई खान तोड़ तोड़ जान नुकने आने। ब्याह करवा के फंस गई खान तोड़ तोड़ जान नुकने आने। देख मेरा लड़ाई भूल गया नित बदले जेठानी मेरी पानी। देख मेरा लड़ाई भूल गया नित बदले जेठानी मेरी पानी। प्रिंसिपल आ रहेगा
And now we have our very own principal, Mr. Pramod, taking a look at this. What do you say? The culture is not very familiar to me. Today I just feel like I'm part of it and I'm very much lived this for a long time. One childhood memory that you'd like to share, sir? Not enough. I was a village boy. So I understand what is the life I live. When I look at this film, I feel very bad because I lived a village boy's lad's life. Spending 15 hours playing around trees, rivers, and farm fields. That was a beautiful life I had. I am from a village and I could recall all those things that sir said. And we now have our vice president here. Sir, how is the show? Very nice. I've got all the old remember 1970, 1962, 60 and 62. I go to Mr. During the 62 war, that times we are listening to this type of thing. Thank you. Thank you so much for your kind words, sir. Since you said you can relate, and it's quite a long time you have been in Punjab, and you can relate to. Speak one line in Punjabi, sir, please. Anything in Punjabi. So we are covering you live. Please don't embarrass us. We are live on YouTube, sir. Please, sir. Students are there to help you. अजे बहुत सोहना अपना है बनाया इन्होंने जो अपना सारा का जो है रखा है प्रोग्राम जो पुराना जो है हिस्टरी जो है पुरानी पंजाब की हेरिटेज है वो बहुत सोहनी लेआउट की है तो मैं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करना जो इन्नी कलैक्शन जो इन्हें की है इन्नी कलैक्शन कितने भी नहीं मिल सकती धन्यवाद Thank you, sir. आपके बचपन ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਹੋਗੇ? देखो बचपन तो बचपन ही होता है साडा बचपन जो है वो अपने गोलियां खेलने वाला होता सी बनते हुए सूझे हुए अजकल जो है बच्चे मोबाइल से खेलते हैं सर तो यही फर्क है असं बंटिया ना खेलते सी ये मोबाइल ना खेलते हैं थैंक यू Thank you. सत श्री अकाल जी। Sat Shri Akal, sir. Get up. Thank you, sir. Hello, Sat Shri Akal, sir. Sat Shri Akal ji. I am happy. No. Very tight and hoping to my life. कितना तार कितना ऊपर दिखा I really apologize. क्या पकौड़े जाओगे बंदा लाना फिर
ਸਾਡੇ ਮੈਸ ਮੈਨੇਜਰ ਮਿਸਟਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਖਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੰਚ ਸਰ ਨੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੰਦਰ ਮੱਕੀ ਰੋਟੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਰਾਜਮਾ ਐਂਡ ਚਿਕਨ ਕੈਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। All the grandparents are requested to please proceed towards the auditorium for the cultural show. ਸਾਰੇ grandparents ਨੂੰ request ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਅੰਦਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਸ਼ੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ grandparents ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ May we request Principal Sir to welcome the Honorable Chief Guest and ਇਹਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਯਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਕੱਢ ਲਾ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਆ ਭਾਜੀ, ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲ। एक मिनट रुक जाइए, 10 मिनट। thank you sir. आजकल के बच्चे अपने ग्रैंडपेरेंट्स बारे की सोचते हैं, आओ देखिए चलो।
जा रही हूँ कि ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं। ये एक औरत और एक आदमी होते हैं जिनके अपने कोई छोटे बच्चे नहीं होते, उनको दूसरों के छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं। इनमें से दादाजी आदमी होते हैं और दादी औरत। इन लोगों को और कुछ काम नहीं करना होता, बस जब हम मिलने आए तो हमसे मिलना होता है। जब हमारे घर आते हैं तो दादाजी को अखबार पढ़ना और सब्जी फल लाना अच्छा लगता है। वो दूध भी लाना चाहते हैं, मगर दूध पैकेट में अपने आप आ जाता। ये लोग इतने बुरे होते हैं कि ज्यादा दौड़ना या खेलना इनके लिए अच्छा नहीं होता। इनके लिए यही ठीक होता है कि हमें अपने साथ बाजार ले जाएं और दुकानदार को हमारी चीजों के पूरे पैसे दे दें। जब ये हमारे साथ टहलने पार्क में जाते हैं तो हम लोग गेंद से खेलते हैं और ये किसी सुंदर फूल, पत्ती या चिड़िया या कीड़े को भी देखते रहते हैं। ये लोग हमें फूलों के रंग बताते हैं और चिड़िया की बोली सुनाकर उनका नाम बताते हैं। फूल तोड़ने से मना भी नहीं करते और खुद तोड़ के हमें दे देते हैं। दादाजी हमें पानी से खेलने को मना नहीं करते, कभी कभी तो खुद भी खेलने लग जाते हैं। ये लोग हमें मना तो करते हैं पर ज्यादा डांटते नहीं। दादाजी तो बिल्कुल नहीं, मारते तो कभी ही नहीं। ये लोग हमें दीवार और पेड़ पर चढ़ने से मना करते हैं, मगर ज्यादा डांटते नहीं। ये लोग कभी नहीं कहते जल्दी चलो देर हो रही है। दादी मोटी होती है और नानी भी, मगर हम लोगों के जूते के फीते बांधना उनको आता भी है और ये उतना झुक भी लेती हैं। दादाजी और नानाजी लोग चश्मा पहनते हैं। सबसे मजे की बात है कि वो अपने दांत और मसूड़े निकाल लेते हैं। जिन सवालों पर पापा मम्मी कुछ नहीं बता पाते या डांटने लगते हैं, ये लोग उन सवालों के जवाब में बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। जब कहानी पढ़ने को कहो तो ये जल्दी में लाइनें छोड़ करनी पड़ते और अगर इनसे एक ही कहानी दोबारा पढ़ने को कहो तो बुरा भी नहीं मानते। कभी कभी कहानी सुनते सुनते सो जाओ तो वही सुलाए रखते हैं, उठाकर अपने बिस्तर से हटाते नहीं हैं। दादाजी को कॉमिक्स पढ़ना अच्छा भी लगता है। सबके पास एक दादा दादी और नाना नानी जरूर होने चाहिए, क्योंकि बड़ों में से सिर्फ वो ही हैं जिनको हमारे साथ टाइम बिताना टेलीविजन देखने से ज्यादा अच्छा लगता है। जब हम कोई गंदी बात भी कर देते हैं तब भी वो हमें हमारी मदद करते हैं। सोते समय कुछ खाने को मांगने पर वो नाराज भी नहीं होते। दादाजी तो सब कुछ ठीक कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक बहुत सी चीजें तोड़ी होंगी। दादी कहती हैं, अभी पिछले हफ्ते उनका चश्मा टूट गया था, वो खुद ही उस पर बैठ गए थे। नानी को खाना बनाना मम्मी से ज्यादा अच्छा आता है, वो खिलाती भी बहुत प्यार से हैं। खाना छोड़ने पर नाराज नहीं होती, क्योंकि वो प्यार कर करके धोखे से सब खिला ही देती हैं। जब दादाजी का पेट खराब हो जाता है तो सबसे ज्यादा मजाक दादी उड़ाती है। जब दादी हलवा बनाती हैं तो दादाजी से ज्यादा तारीफ पापा करते हैं। दादी मुझे रोज आइसक्रीम दिलाती हैं। दादा दादी बहुत अच्छे होते हैं। मैं चाहती हूँ वो हमेशा मेरे साथ रहें। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं। ये एक औरत और एक आदमी होते
बच्चे अच्छे लगते हैं। इनमें से दादाजी आगे। थैंक यू। सत श्री अकाल, नमस्कार, खुशामदीद। हार्वेस्ट वालों ग्रैंड पेरेंट्स ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। We now take a moment to warmly welcome Vice President of Harvest, who is also the Honorable Chief Guest today, Mr. Gurdeep Singh, DIG retired. Mr. Gurdeep Singh plays a pivotal role in the development of the school. He brings in wealth of experience applicable to the growth of students. We are honored to have you with us, sir. A joyous welcome to our principal, Mr. Pramod Pillai, Manager Tennis Academy, Mr. Gaurav Bharadwaj, Head Coach, Mr. Strakine, School Committee, Mr. Dharmendra, Mr. Anish and Mr. Chamkar. Hope you all enjoy the program. And on that note, I am Ragini. I am Athinder. And I am Pa. And we will be your hosts for today. Ragini, let's hand over the stage to Parth. Hello everyone. I would like to call my co-host Ridhima. Ridhima, Ridhima, where are you? Here I am, Parth. No need of screaming. Well, I'm very happy to have you as my co-host. Sat Sri Akal ji. Ridhima, I am super happy to have my grandparents here. Well, I can understand that because I am super duper happy too. Parth, do you know grandparents have ears that truly listen, arms that always hold, and love that's never ending, and a heart that is made up of gold. ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਸੀਨੀਅਰ ਐਂਡ ਜੂਨੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10EAK 1809 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਵੀ ਪਿਆ। ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Okay, so here we bring the band from checkpoint. We have Rahul Kular on drums, Armandeep on acoustic guitar, Dalpreet on bass, Aditya on electric guitar, Riya Wadapalli on keyboard, and Vanshdeep on vocals.
Now we have the next round of IC1. I would like to invite students. So here we have Sahil Preet on drums, Pratik on bass, Arman again on guitar, Aditya on electric guitar, Arpan on keys, Tanisha, Kuber, Ria and Nikita on vocals.
wonderful performance. Don't you feel that, Ragini? Yes, I do, Alinder. Do you remember what happened last week? What? The famous guitarist, Mr. Ehsan Nurani, visited our school. How could I forget that? Our school band team, Zaria, who performed, was highly appreciated by Mr. Nurani. We would like to thank Mr. Himanshu, Mr. Devashish, and Mr. Sarvesh for working with the students for putting up this stupendous performance. May we invite Principal Sir to address the gathering. Respected Vice President D.A.G. Gurdeep Singh, retired. We have tennis manager Mr. Gaurav and our tennis head coach is still smiling there. Whether I am able to read his name, Mr. Djokovic. I'll stop there. Dear members of Harvest Tennis Academy and School, and my lovely grandparents over here, and parents, staff members, and my children. For Harvest, Grandparents' Day is a very big event. We just not make it just an event. When you walk into the campus, you can understand the touch and feel that we have for you as grandparents. Living almost half or more part of the life, seeing this wonderful life and experiencing and sitting with a full quorum at Harvest Auditorium today, we really would like to thank you for these lovely kids at Harvest. When I say these lovely kids, one of the recent study in Europe, very authentic study, says that what our children are 70% genetical qualities. The 30% we, schools, parents, homes, society can contribute. When the greeting or the invitation card came home, if you would have seen, there is a handprint of children in it. Through this handprint, in fact, we want to say that 70% those kids are really the handprint of you. It means a lot to us because actually a school, family, or the society, the community around us, what we are really trying is to make a better generation than us. There's a big question mark whether we are making a better generation or not. But without any doubt, I can tell you that the children today are using facilities better than our grandparents. But at the same time, if I ask you whether our grandchildren or your children are more happier than you, I don't know. I don't know where that answer is yes or no. I say it is not. Grandparents, as you lived your life, how happy you were with less technology. Our children and their parents are not that happy with better facilities and technology today. I heard like this: if you are poor, you suffer poverty. If you are rich, you suffer tax. If you are not married, you suffer. If you are married, you know better. If you don't have children, of course you suffer. When you have children,
of course I can see every day in and out how much suffering is there. So among all these technology and facilities, because our children enjoy better than a life of Emperor Akbar, among all that, are they very happy? That is a big question. Big question to every social institution, including schools, including Harvest. So when you ask me, what are you doing here? Of course, the society will ask us for academic percentages. But I tell you, for me and Harvest or our staff members, academic performance, we are very confident it will come. More than that, what we are looking, in fact, is, are we building a very good human being? So, children are like, excellent example is pizza. Pizza base, have you seen pizza base? Pizza base alone won't give any joy. How many of you really enjoy pizza base and enjoy? Nobody can. The real matter is the topping, the ingredients. So, at grandparents and family at home, the community at large, and school as a very social, responsible organization, we are trying to improve quality ingredients in them so that they live as great human beings, better than you people, my generation. So compared to these both generations, our children are better or not. All that is the blessings of you and the handprint that we have been printing upon. And thank you so much for this wonderful day. And I'm very sure children have really prepared well with all their mistakes and problems in between. But there is a lot of love, feeling of love as an ingredient in that. And I'm very sure all of you will enjoy it. Thank you so much. Thank you, sir. Now I would like to invite Principal Sir to escort the chief guest to greet the gathering. थैंक यू। मैं क्योंकि सारे जो है अपनी पंजाबी भी मेरी उम्र के तकरीबन सारे बैठे हैं जो कि ग्रैंड पेरेंट है, मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ प्रिंसीपल और स्टाफ जिन्होंने मैनू ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं जो है इस प्रोग्राम को प्रेजेंट करूँ, क्योंकि साढ़े फाउंडर सरदार हरिंदर सरा वो ऑन दी वे कनेडा तो आ रहे हैं, जस्ट तकरीबन जो है आधे घंटे के बाद पहुंचने वाले हैं। तो मैं जो है एक बार फिर प्रिंसीपल डायरेक्टर स्पोर्ट्स स्टगना पूरा नाम जो है, क्योंकि ना इहो जिहा है जोड़ा बड़ा मुश्किल है, गौरव और जो टीचर स्टाफ जिन्होंने जो है मेहनत करके आपके सामने जो है जो प्रोग्राम दिखा रहे हैं, होप करते हैं कि बहुत बढ़िया होगा, देखने लायक होगा। साथ ही मैं जो है जिन्होंने तैयारी की है कराई है उन्होंने भी बहुत बहुत ध्यान, उन्होंने करीबन 15-20 दिन से जो है तैयारी कर रहा सी। मैं पहले भी जो है इतने मेरा आता भी मेरा जो है स्कूल जो है काफ़ी जो है लिंक है, इस करके जो है तकरीबन जो है बच्चों ना प्यार भी हो गया है और प्रोग्राम सारे जो है देखते रहना है। और एक बार फिर मैं स्टाफ का प्रिंसिपल का सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करना कि मैनू जो है स्टेज पर आने का मौका मिला। धन्यवाद। Program by invoking the divine blessings of Lord Ganesha.
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। भाव भगत से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मुझको अति भावे, गोसावी नंदन निश दिन गुण गावे। What a marvelous performance. I would like to thank Miss Sukhi, Miss Neha and Mr. Mantri for their guidance to Vandana girls. Over to Sapan ma'am. Thanks ma'am. Harvest ਦੇ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ।
ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ। सर प्लीज टेल मी आपका नाम। हेलो साउंड मैं मैं रायकोट का वासी हाँ, मेरा नाम कृष्ण कुमार है। तो रायकोट की बहुत बड़ी हस्ती 10वीं पातशाही गुरु गोबिंद सिंह जी उत्थे धरती ते पधारे सीगे ते उत्थे शाम का वक्त सी ते उन्होंने दुध पीना सी या चाह पीनी सी, दुध चाहिदा सी, दुध नहीं सीगा ते टोकड़ उसर झोटी सी ते गुरु साहब ने कहा ले भी तू जो भी उत्थे वर्कर सीगे ले तुसी बैठ जाओ दुध लियाओ ते उसर झोटी दुध देगी। वही होया जी, उन्होंने थापी मार के बैठ के ते माझी ने दुध दिता। दुध भी किहदे विच दिता, जिहड़ा बर्तन लिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਛੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ, ਦੁੱਧ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਆਈ ਗੈਸ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਵਰ ਟੂ ਆਰ ਐਂਕਰਸ ਪਲੀਜ਼। आज रल मिल खुशियां मनाइए कि वीर जी वहां चलिए, होए कि वीर जी वहां चलिए। What was that, Tanisha? तुम शादी में शामिल होने नहीं आई हो? Don't you remember? We are of a grandparents' day. Of course I remember that. But क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे grandparents की शादी कैसे हुई होगी? हाँ, मैरिज पैलेसेस में जैसे आज होती है। अरे बुद्धू, तब मैरिज पैलेसेस ही नहीं थे। काश मैं अपने ग्रैंडपेरेंट्स की शादी देख पाती। Guess what? You are in for a treat because our tiny tots are going to show us the wedding ceremony of the bygone days. CS2 ਤੇ A ਤੇ B ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਲੁਭਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਗੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਝੂਠ ਲੱਗਦਾ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੀ
Thank you. छाड़िया नहीं तुसी मैनू मैं पिंदी जस्से दी दादी और फिर मिसेज पुष्पिंदर जॉनसन हुण तुसी सोच रहे होवोगे पुष्पिंदर ते जॉनसन किद्दां सबर रखो दसांगी हौली हौली ओ बैठो आ रहे ने मेरे ओ जापानी शूज दे रूसी टोपी बाज दे तारे ज़मीन पर ये तारे कौन हैं? CS2A ਤੇ B ਦੇ ਬॉयਜ਼ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗਮਗਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी अपना सीना ताने मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने पढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये सन CS2A ਤੇ B ਦੇ ਬॉयਜ਼ सत श्री अकाल मैं मिस्टर जॉनसन फ्रॉम रूस ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆਏ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂ ਸਰ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਨਾ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਬਸ ਤੇ ਚਿੱਟਿਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ छोटे छोटे कदमां नाल ਤੁਹਾਡੀ खुशी ਵਿੱਚ इजाफा ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ CS1 ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੀਏ
कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 कबूतर जा जा जा। मौसम बड़ा हंसी है फिर भी प्यार उदास है, उनसे कहना दूर सही मैं दिल तो उन्हीं के पास है। तू ये संदेशा उनको सुनाना, तू ये संदेशा उनको सुनाना, मैं पीछे आया कबूतर जा जा कबूतर जा कबूतर जा कबूतर ਤਾਂ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੁਮਾਲ ਜੱਟਿਆ ਹੀ ਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਹੌਸਲਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹ PP1A ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। झूमता मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुंह में पसीना, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई। कोई रंगीन था सपनों में आके, एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के, याला याला दिल ले गया, याला याला दिल ले गया। ठंडी सड़क नीम तले तीर नजर धूप चले, लाल चुनरिया चाल निराली, सर पे झूमर कान में बाली, हाथ में चूड़ियां मोतियों वाली, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके, एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के, याला याला दिल ले गया, याला याला दिल ले गया। दो दिल जख्मी हो चुके हैं, देखिए अब ये की होता है। हाँ, प्यार की शुरुआत तो हो गई सी, पर एक ही तंगी सी, ऐसी पंजाबण ते मैं सी रूसी ते उधरों ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਲੜ ਲਾ ਗਏ। ਖੈਰ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਗਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰਾਣੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਨੇ PP1B ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ।
लगता है मिस्टर एंड मिसिस जॉनसन की कहानी में इन्हों का बहुत अहम रोल है। नच नच के दिखाओ आ मुझको गले से लगा, सबको नचाओ नच नच के दिखाओ आ मुझको गले से लगा। मुंडे से जरा आंख लड़ा, मुंडे से जरा आंख लड़ा, तू मेरी गल मान जा, तू मेरी गल मान जा। सजा के सहरा बारात लेके आओ, दुल्हन तुझे बना के डोली में लेके जाओ। शावा 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 शावा, गोली समझ के मुझ पे ना डाले सजाने, शादी नहीं करूँगी जवानी जा दीवानी। शावा शावा सुन अलबेली मेरे तन्हा अकेले अब कटती नहीं रतिया। चल हर चल चल छोड़ कर सब देखती है सखियाँ, तू मेरी गल मान जा। वेड़ा शगना दा मेहंदी दी रस्म तो होनी ही सी। ये रस्म लई आईयां हन PP2 दियां मस्त लड़कियां। रौनक लगा दिंदी है जागो, सुत्तियां होयां नूं उठा दिंदी है जागो। PP3 गर्ल्स पूरियां तैयार हन रौनकां लगाउण लई। जागो जगमग जगदी नी मामी, मामे नाल सजदी न पले ओ ऐस वेले, वे बलदी वड़िया वे तेरिया गिठ गिठ बत्तियां वटियां वे
ਸ਼ਗਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। PP3 ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰਾਣੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰਾਣੋ ਇੰਨਾ ਲੜੇ। ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। PP2 ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ले लो
झूठे दे दो पैसे ले लो दुल्हन के तेवर तुम दिखलाना यूं तेवर दुल्हन के तेवर तुम दिखलाना यूं तेवर पैसे दे दो झूठे ले लो पैसे दे दो झूठे ले लो झूठे दो पैसे लो झूठे दो पैसे लो कुछ ठंडा पी लो बड़े बड़े लोग नहीं है कुल्फी खा लो बहुत खा चुके पान खा लो बहुत खा चुके बहुत खा चुके बहुत खा चुके आज रसमलाई आपके लिए इतनी मिठाई आपके लिए बनाए झूठे खाएंगे तो आपकी मर्जी नाजी तौबा किसी बेतुके शायर की बेसुरी कव्वालियों दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों झूठे दे पैसे ले लो झूठे दे दो पैसे ले लो झूठे दो पैसे लो झूठे दो पैसे लो झूठे दो पैसे लो झूठे दो पैसे लो ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਖੜੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ये तो ऊपर चढ़ जा बस नहीं हलते जी बस ਪਿੰਦੀ ਚੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਚ ਗੁਆਚਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ Thank you, Tiny Tots, for taking us down the memory lane so beautifully. We appreciate Ms. Jaspreet Kaur, Ms. Namrata, Ms. Prerna, Ms. Neeru, Ms. Poonam, Ms. Sapandeep, Ms. Jyoti, Ms. Kumar, Ms. Jaspreet, Mr. Balbir, and Mr. Manpreet for their monumental efforts. Over to Vaneet ma'am and Sapan ma'am. ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹਸੀਨ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹਸੀਨ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। मेरा नाम शशि अरोड़ा, मेरा लुधियाने का है
ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਜਗਰਾਉਂ ਸੈਟਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੈਂਡ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਜਗਰਾਉਂ ਆਉਣ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ मेरी मैरिज भी इतने सेट हुई क्योंकि मेरी सिस्टर जगराउं से गई सी। They are wonderful because they tell stories, They spoil their grandkids. they teach traditions, They cuddle. They listen. they wipe away tears. They hug. In short, grandparents simply adore grandchildren, and no celebration is complete without grandparents. दिवाली का टाइम है, हर घर में खरीदारी और खर्चे को लेकर झगड़ा हो रहा है। आइए चलते हैं ऐसे ही एक घर में जहाँ पति पत्नी दिवाली शॉपिंग को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। अरे अरे ये क्या कर रही हो? सुनो जी, इस बार मैं दिवाली पे आपको फालतू खर्चा नहीं करने दूंगी। अरे फालतू खर्च क्या है? 1000 की मिठाई, 200 के फल, मूर्ति और क्रॉकरी 300 की, तुम्हारे लिए साड़ी और मेरे लिए पैंट कमीज, बस इतना ही। सामान तो थोड़ा सा है पर नोट बहुत लग जाएंगे। अरे भाई, साल में एक बार तो दिवाली आती है, मनाए नहीं क्या? आप दिवाली नहीं दिवाला बनाना चाहते हैं? इधर लाइए, मैं लिस्ट बनाती हूँ। अरे छत पे इतने जाले लगे हैं, इन्हें उतारने के लिए एक ब्रश लाना, सिर्फ 5 रुपए का, और एक झाड़ू भी। शाबाश, दिवाली की लिस्ट में झाड़ू और ब्रश बढ़िया है। चलिए जी, आप ब्रश बाद में ले लेना। तो मिठाई 200 रुपए की। 200 रुपए की मिठाई? हम क्या बांटेंगे? किससे पूजा करेगी और खाएंगे क्या? देखिए, लोगों के घरों से भी मिठाई आती है। इस बार मैं टीना की मिठाई, बीना के घर बीना की मिठाई पूजा के घर दे दूंगी। बहुत अच्छे। आप चुप रहो, मुझे लिस्ट बनाने दो। सारे भगवानों की एक ही मूर्ति लाना, क्रॉकरी टूटी ना हो, 200 से ज्यादा नहीं खर्च करना। कोशिश करूंगा। चलो, मूर्ति और क्रॉकरी तो ले ली, अब मिठाई ले लूं। वाह, जलेबियां बन रही है। देखना बाबूजी, चाशनी गरम है। अरे हाय हाय, जल गया हाथ। अरे मिठाई का
धन्यवाद अंकल जी। धन्यवाद बाद में, पहले हलवाई को 500 रुपए दो। अरे वो क्यों? वो इसलिए ताकि मैं नई मिठाई ले सकूं। मगर ये डिब्बे? घबराइए नहीं, हम आपको नए डिब्बों में मिठाई डलवा देते हैं। ओ छोटू, मिठाई तोल दे, पैसे ये साथ दे देंगे। ए मिस्टर, निकालो 500 रुपए। मैं क्यों दूं? अबे निकालो तेरी पहलवानी। मम्मा मेरा कॉलर तो छोड़िए। अरे जाने दो बेटा, क्यों दिवाली पर झगड़ा करते हो। आप पैसे दीजिए। ये लीजिए आपकी मिठाई। लगता है वहाँ कपड़ों की सेल लगी है। लीना मिठाई देखकर गुस्सा करेगी, तो उसे खुश करने के लिए एक साड़ी ले लेता हूँ। ये साड़ी कितने की है? बाबूजी पूरे 600 रुपए की है। लूट मची है लूट, 1000 का माल 600 में। अरे वाह, पूरे 400 बचेंगे। इसे पैक कर दीजिए। ये लीजिए और लाइए पैसे। भाई साहब, आपके पैसे नीचे गिर गए हैं। मैं सब समझता हूँ। मैं नीचे झुकूंगा और तुम मेरा सामान चोरी कर लोगे। चलो चलो आगे बढ़ो। अरे गुरु, आप तो हमारे भी उस्ताद निकले। अरे अरे, मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ, बस जरा होशियार रहता हूँ। नहीं साहब, आप उस्ताद तो हैं। चलिए, दिवाली की शुभकामनाएं तुम्हें भी। अरे भाई, मेरा सामान कहाँ है? साड़ी और मिठाई के डब्बे। वो तो उस लड़के का साथी ले गया। कौन सा साथी? वही जो आपके पैर छू रहा था। अरे बाप रे, तो वो ठग था। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? चलो, क्रॉकरी और खील बताशे तो है, इन्हीं से दिवाली मनाएंगे और पत्नी की डांट भी खाएंगे। ब्रश ले लो, जाले साफ कर लो। अरे भाई, एक ब्रश देना। 10 रुपये निकाल लो बाबूजी। 10 रुपए? लूट मची है क्या? लेना है तो ले लो, नहीं तो जाने दो। मेरा टाइम खराब मत करो। आज सबसे लूट रहा हूँ भाई, तू भी लूट ले। झाड़ू ले लो, ब्रश ले लो। झाड़ू ले लो, ब्रश ले लो। झाड़ू ले लो, ब्रश ले लो। अरे मेरे मुंह से जाले क्यों उतार रहे हो? सॉरी सॉरी। अरे अंधा है क्या? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अबे सॉरी के बच्चे, पहले तेरी सफाई करते हैं हम।
गुम नहीं है। क्यों जी, क्या हुआ? सुना है बाजार में किसी ने बम रखा था। मैं तो सुबह से खुद को कोस रही थी, आपको बाजार भेजा ही क्यों? भगवान ने मेरी सुन ली, आप ठीक ठाक घर आ गए। लीना, बम की भगदड़ में सारा दिवाली का सामान वहीं गिर गया। एक पुलिस वाले ने मेरी पिटाई कर दी। देखो ये क्या हाल हो गया। हाय हाय, कैसे खालू डेट दी पुलिस वालों ने। पर आपको भी तो जान से ज्यादा सामान की पड़ी थी। और वो तुम्हारी साड़ी, बहने गई साड़ी और चूल्हे में गया सामान। आप सही सलामत आ गए, मुझे और क्या चाहिए? भगवान का शुक्र है। For this lovely expression of love, we would like to thank Miss Kamal and Miss Tapan. Over to Sapan ma'am and Vineet ma'am. ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। एनीवन, पुरानी या नवी फिल्म? मैं देख रही हूँ कोई हाथ, कोई भी। शोले? हाँ जी, कौन? लॉस है। I am very happy and am present here for the first time at the school RO Punjab and staff cooperation in our fields. I feel we have come to our home when I was a child. I remember so many things, so many child, but I am sorry I will not explain now. But still, I thank you for staff, principal sir, and all people here. Thank you very much. थैंक यू सर। सर मैं, हाँ जी, हाँ जी, मेरी मनपसंद फिल्म थी शोले। अब तेरा क्या होगा कालिया, सदासी मैंने तो तुम्हारा नम खाया है। थैंक यू सर ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Over to the anchors. Tanisha, would you like to have a glimpse of grandparents from all over India? Well, that's gonna be amazing. Well, then get ready to be amazed as PV4, 5 and 6 bring together grandparents from different states. ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया,
सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बई मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बई मेरी जान। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम दो मचल गए हो यूं ही फिसल गए हा हा हा। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, देखी अपनी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, देखी अपनी यारी मेरा दिल जलाओ ना। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। ओ इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में बार बार देखो, हजार बार देखो, देखने की चीजें हमारी दिलरुबा ताली हो, ताली हो, ताली हो। ओ गोरे गोरे ओ बाकी छोरे, कभी मेरी गली आया करो। ओ गोरी गोरी ओ बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। ओ गोरे गोरे ओ बाकी छोरे, कभी मेरी गली आया करो। ओ गोरी गोरी ओ बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। जरा नजरों से कह दो जी निशाना छूट ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना छूट ना जाए। जरा नजरों से कह दो जी निशाना छूट ना जाए। किसी ना किसी से कभी ना कभी, कहीं ना कहीं दिल लगाना पड़ेगा। किसी ना किसी से कभी ना कभी, कहीं ना कहीं दिल लगाना पड़ेगा। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ
पूछो कुछ ऐसी बात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो कुछ ऐसी बात। What a wonderful show by PB4, 5 and 6 students. Let me thank Miss Pushpinder, Miss Pratiksha and Miss Satashi for this amazing performance. Over to Sapan ma'am and Vaneet ma'am. ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਰਖੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਿੱਧੇ ਜਾਂ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਔਨ ਚਰਖਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਗਿੱਧੇ ਜਾਂ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੀ ਚਰਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਚਰਖਾ ਮੇਰਾ ਚੰਨਣ ਦਾ, ਚਰਖਾ ਮੇਰਾ ਚੰਨਣ ਦਾ, ਕਦਾਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਚਰਖਾ ਮੇਰਾ ਚੰਨਣ ਦਾ, ਚਰਖਾ ਮੇਰਾ ਚੰਨਣ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ ਆਈ ਗੈਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਹੈ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਆਈਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਓਵਰ ਟੂ ਆਵਰ ਆਈਟਮਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਉ ਮਿਲਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਉ ਬਥੇਰਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਲੈ ਲੈ ਚਾਦਰਾ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ। What was that, Ragini? Yes, what? It's guitar time. Oh yes, what celebration is complete without colorful, vibrant and full of energy guitar? तेरी मेरी होई लड़ाई हुंडी लोड़ दलीला दी, जे तू जट्टा ना मुंडा मैं भी कुड़ी वकीला दी। कर के दे शिफ्ट हो गया और एंट्री आई और एंट्री Happy birthday, Jamie, Kali Kali
These Gidda girls made it so difficult to stop ourselves from dancing. Our heartfelt thanks to Miss Pooja Dhaman and Miss Baljinder for the Gidda girls performance. Over to Aneek ma'am and Sapan ma'am. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੁੱਪਾਂ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੜਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ, ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? Anyone? Coming to you, sir. ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਲਚਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਧੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿਓ ਅੱਛੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਏਗੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਪਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, sir. बहुत ही सोहना मैसेज ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। Of course, health is wealth. ਤੇ ਹਾਂਜੀ, I'm sorry. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨਿਲ ਸੇਠੀ, ਮੈਂ ਯੋਗ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਯੋਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਾਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੇਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਈਏ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਇਹ ਖਾਓ, ਇਹ ਨਾ ਖਾਓ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਗਰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਣਗੇ। Oh, that will be real service to society, and we owe it to the coming generations, I think. Thank you so much. Thank you, ma'am. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਪੇਸ਼ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ before I go to the next grandparent. ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Thank you, and I'm coming to you. ਆ ਰਹੇ ਆ ਮੈਮ, ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੌਰੀ ਮੈਮ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ,
ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਲ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਰਖਾ ਕੀ ਹੈ, ਚੱਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਪਰ ਆਪਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ Thank you, ma'am. Thank you. Please, ma'am. Thank you for your valuable words, ma'am. Thank you. Over to our anchors, please. किसी ने बहुत ही किया कि दादाजी मेनू ना शब्द मेनू ओह सिखाउण वाजे ते फिर हाथ रख के प्यार नाल वो शब्द सिखाउण। Only 5 minutes of the program is left. I request everybody to sit down. Students of PP4, PP5 and PP6 are coming up with a drama. Let's welcome them.
जब मैं उनको बचाने गया तब उन्होंने मुझे मारा। अरे मेरे पास तो 50 रुपए है, अगर वो मैं शिबू को दे दूंगा तो मैं पटाखे कैसे खरीदूंगा? सोचो सोचो। चलो कोई बात नहीं शिबू, ये लो 50 रुपए और अपने लिए पटाखे और मिठाई ले लो। अरे ले लो शिबू ले लो। आप बोल देते हो अब दिन बहुत बड़ा है, जल्दी से जाओ जल्दी से आओ। अरे ये तुमने क्या किया? अपने 50 रुपए उसे दे दिए। अरे शिबू तुम्हें पता है ना एक छोटे आदमी छोटों को छूना नहीं चाहिए। अरे तुम क्या कह रहे हो? मेरे दादाजी ने सिखाया है कि कोई छोटा या गरीब नहीं होता, सब बराबर होते हैं। त्योहार इसलिए ऐसे है कि हम मिलजुल कर बनाए। अरे आशु तुम कभी नहीं सुधरोगे। इस बार तो ना सही भैया, और अगली बार मैं जरूर पटाखे खरीदूंगा। जैसी आपकी मर्जी। रंग बिरंगे पटाखे, चमकदार पटाखे, जगमग पटाखे। अरे दीदी मेरी बात तो सुनो ना। तुम क्यों नहीं सुन रही मेरी बात? मुझे नहीं सुननी तेरी बात। दादाजी ने जो 50 रुपए थे वो कहाँ गए? अरे दीदी मैं पटाखे लेने गया था। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा शिबू वहाँ पर बैठा रो रहा था और मैंने अपने 50 रुपए उसे दे दिए ताकि वो अपनी दिवाली अच्छे से मना पाए। अरे तूने क्या किया? अपने 50 रुपए उसे क्यों दिए? शाबाश मेरे पौधे, शाबाश। आज तुमने मेरा मन प्रसन्न कर दिया। अगर ऐसे ही सभी लोग एक दिए से दूसरा दिया चलाते रहे तो दिवाली का अलग ही आनंद होगा। दादाजी ये सारी बातें मैंने आपसे तो सीखी है, और ये सारी बातें मुझे कौन सिखाता? जीते रहो बेटा, जीते रहो और दूसरों को भी ऐसी बातें सिखाना। Thank you, Mr. Ashish, for his efforts for this mind-blowing performance by kids. Over to Vineet ma'am and Sapandeep ma'am. ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਕਰਸ। ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰੋ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕ ਗੀਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਉਂਗੀ। ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ ਬਾਬਲੀਆ ਸਾਉਡੀ ਵੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਲੰਬੀ ਉਡਾਰੀ ਵੇ ਬਾਬਲ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਵਰ ਟੂ ਸਪਨ ਮੈਮ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਕਮਿੰਗ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ। Really true ma'am, true, I agree ma'am। ਮੈਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੈਡਿੰਗਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Thank you ma'am, thank you। Over to Vineet ma'am for the next question। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ
ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੀਤ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ ਸੁਣੀਏ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਜਣ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। हेलो, मेरा नाम मंजू है, मैं अबोर से बिलोंग करती हूँ। मैं लोकगीत सुनाना चाहूँगी। नीक मेरी अख काशनी दूजा रात देवनी रे मारिया शीशे नू तरेड़ पै गई वाल वाउंदे ने ध्यान जदों मारिया एक मेरी अख काशनी। Thank you very much, ma'am, for that gift station. Over to the anchors. Hope you all enjoyed the performances. Ragini, let's end the program. ਓਏ ਬੱਲੇ 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 ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਏ? Relax, Saring. We were just pulling your leg. It's obvious. How can anyone forget about Bhangra? ਉਹ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਭੰਗੜੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। Hope you all will enjoy the program. ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰਾ? DJ ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਰ ਕੁੜਕਦੀ ਅਸਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੌਸਲਾ ਵਰਗੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਧਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਸਿਆਲ ਦੀ ਨੱਚਦੀ ਕਾਵੜ ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਸੁਰ ਪੱਲਾ ਅੱਜ ਕਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ तेरे गुट नू गला सरदार ने डायमंड दी चांद मारांगे गुट नू गला सरदार ने डायमंड दी चांद मारांगे सारे पूरे ठोक ठोक करदा मैनू सारे कहतो रोक टोक करदा गल्लां नाल सुपने दिखा पिछों आख दिना मैं तां जोक करदा सुने सुने लगदे production in the mix. चौधरी दे चंद वर्गा तुड़े एक तरह बन के मेरा एक पक्का गंगा सेम बस खड़े मिंट दी पूरा फड़की मार के चट्टा नी मुंडा चट्टा गाए कतरू ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਰਾੜੀ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤੋਈ ਤਵੀਰ ਕਾਨੇ ਮੁੰਡਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਰਾੜੀ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਵੀਂ ਬੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੱਜ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਾਨੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ੌਕੀ ਕੱਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਥੋਂ ਛਾਵੇ
ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਚ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਜ਼ਮਾਏ ਨੇੜੇ ਹੋਰੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਤੇਜ ਪੰਜਾ ਕੋਲ ਕਿੱਲੇ 57 ਮਾਰ ਤੇਜ ਪੰਜਾ ਕੋਲ ਕਿੱਲੇ 57 ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ Miss Rita and Miss Prabjot for putting together the Bhangra performers. It was a pleasure being your hosts today. We thank Miss Vineet and Miss Shweta who helped us with the sampling. As we come to the end of the program, we would like to call Miss Vinita Seth, the activity coordinator of Harvest, for the vote of thanks. A very good afternoon to all. I hope you all enjoyed the show. Gratitude can transform common days into thanksgiving, turn routine jobs into joys, and change ordinary opportunities into blessings. I feel honored to propose vote of thanks on this auspicious day, the Grandparents' Day celebration at Harvest International School. Harvest believes that grandparents play a very important role and contribute in the development and shaping up of a child. That's why Grandparents' Day celebration has become an important part of our annual calendar, and we want you to be here every year. Recognizing the same, first I begin by thanking all my team for giving us all the strength and wisdom to organize an event of such magnitude. I thank our chief guest, Vice President, Harvest International School retired DIG Gurdeep sir for his presence. Thank you sir for your presence and your blessings. My sincere thanks to our management, especially our Director Campus, Ms. Harshita Nagar. She's not here. We miss you, ma'am, for all the support she provided to us, and in her absence also the program went on so smoothly. Thank you Gaurav sir and head coach Harvest Tennis Academy for your presence. No words are enough to express my gratitude for the esteemed leadership of our principal, Mr. Pramod Pillai. Please give a big round of applause for his involvement, direction, suggestions, feedback from the inception till the end. Thank you so much, sir, for a pillar support for all of us here. सबसे बढ़कर धन्यवाद आप सभी दादा दादी, नाना नानी, आप सभी ग्रैंड पेरेंट्स का जो बहुत दूर से कई मुश्किलों के बाद यहाँ आए. And it's a blessing for Harvest and for our school, our students, for your presence here. Please keep blessing our students. I thank our estate officer, Mr. Chamkor, and his team for all the arrangement that go behind the curtain and never seen. Thank you so much, sir. Thank you, Mukhtiar, sir, for hospitality and the sumptuous food that is waiting for you in the mess. Thank you, Gurmeet, sir, for the parking facility. I also thank Dharmendra, sir, Yadvinder, sir, for the perfect light and sound arrangement. Thank you, Kostav, sir, and Mr. Spreet Bedi for all the beautiful decoration. Thank you, Uppal, sir, for all the purchase. My highest gratitude to our activity coordinator, Mr. Sandeep Kumar. Please give a big round of applause for Sandeep, sir. The whole idea, theme, conceptualization, video, recording, everything done by Sandeep, sir.
Hats off to you, sir. Hope you all enjoyed the program, the live stalls and games. We salute our talented team of teachers for their 15 days hard work and dedication. Thank you, our little babies, young singers, dancers, and performers for winning our heart today with your cute performances. Thank you all the council members, volunteers, and people who were directly or indirectly involved in the running of the show. Thank you all once again for your esteemed presence. I now request you all to please join us for the lunch. The new mess on the left side is for the vegetarians, and the old mess on the right is for non-vegetarians. Thank you so much. I have to salute all of you for coming. Hello, sir. अभी बंद कर दिया अभी अभी बंद कर दो अभी है कर दो बंद कर दो